Now my dear friends, we begin with a new topic and that is called as Inter-Halogen Compounds. I had made a mention of this particular point before as well, and I told you that in the later part of the chapter I'll explain you this. It's Inter-Halogen Compounds. They are nothing but neutral molecules which are going to be formed by the combination of different halogens amongst themselves. Okay, these are called as what? Inter-halogen compounds. Neutral molecules formed by the combination of different halogens. ठीक है? अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बारे में बात करेंगे और we talk about types. Classification, or we call it as what? Types. So there are 4 types now in this. पहला है that is XX dash. I give an example, that is say IF या CLF या फिर BRF. Next is XX dash 3. We have IF3, CLF3, BRF3. Next is we have XX-5. So we have IF5 and a CLF5 and BRF5. And next we have is XX-7. Okay, and one example over here is IF7. So these are the classification part of these interhalogen compounds. Now, when we talk about X and X dash, so what we have to say is with respect to atomic size and with respect to electronegativity. Okay, so X, X dash, X, X dash. Alright, so with respect to atomic size, we say X is greater than X dash. With respect to electronegativity, we say X dash is greater than X. Alright, so therefore, one important point which I would like you to understand, and that is that whenever fluorine is going to form an interhalogen compound, it can never behave as X. Okay, वापस से बोलता हूँ, अगर फ्लोरीन एक इंटरहैलोजन कंपाउंड बनाता है तो वो कभी X की तरह बर्ताव नहीं करेगा, क्योंकि X वो है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है. Okay, in the entire periodic table. So it means, दूसरे शब्दों में मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि अगर फ्लोरीन इंटरहैलोजन कंपाउंड बनाता है तो it will always behave as what? X dash. Okay, और जिसका प्रमाण ज़्यादा होता है as compared to X. So see, everywhere fluorine is going to be in greater proportion, okay, as compared to the other halogens with which it is combining. Okay, so I hope you have understood the introduction of these interhalogen compounds. Alright, so once we understood about the classification, अब हम लोग discuss करेंगे about some properties of interhalogen compounds. तो property में सबसे पहले it is named as the halide of the more electropositive halogen. ठीक है, नहीं समझा तो मैं आपको बताता हूँ. IF5, ओके, ये है. अभी इसको आयोडाइड के फॉर्म में लिखना है या फ्लोराइड के फॉर्म में लिखना है. Okay, that is going to be a little bit of a confusion. So what we do is we say it is a halide of a more electropositive halogen. तो अभी दोनों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? आयोडीन है. तो ये क्या बन गया? फ्लोराइड बन गया. फिर तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे? आयोडीन pentafluoride. ओके, पेंटाफ्लोरीन आयोडाइड नहीं बोलेंगे, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड. ओके, हलाइड किसका होगा? ओके, हलाइड ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन. तो आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो फ्लोरीन विल बिकम द हलाइड. सो हलाइड ऑफ द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन इज IF5. नेक्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स of interhalogen compounds is always even. Okay, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. समझो IF7, तो it is going to be 8. CLF3, it is going to be 4. IF5, it is going to be 6. CLF, it is going to be 2. ओके, ये 8 एटम्स है. इधर 3 और 1 4, इधर 5 और 1 6, इधर 1 और 1 2. सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर ऑलवेज इवन. नेक्स्ट वन इज, याद रखिएगा, द नंबर ऑफ X dash atoms are always odd.
ओके यानी आपने देखा होगा x डैश है तो यहाँ पे x डैश इज 1, फिर x डैश 3 है तो दैट मीन्स यहाँ पर 3 है, फिर x डैश 5 सो वी हैव गॉट 5, x डैश 7 है तो यहाँ पे x डैश इज हाउ मच 7, सो 1 3 5 7, so they are all considered as odd. Next one is properties of interhalogens की जब हम बात करते हैं, I just write down in short interhalogen, it is going to be intermediate, okay मतलब वो बीच में है between the constituent halogens. कॉन्स्टिट्यूएंट हैलोजेंस का मतलब क्या हुआ कि जिस हैलोजन का वो बना हुआ है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं IF5 की बात करता हूँ तो IF5 का जो प्रॉपर्टी है वो बीच में है, किसके बीच में, बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडीन एंड फ्लोरीन, क्योंकि आयोडीन एंड फ्लोरीन का वो बना हुआ है, सो बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट हैलोजेंस. नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पर इन दीज कंपाउंड्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, सो दैट मींस इट इज गोइंग टू बी व्हाट, डायमैग्नेटिक इन नेचर. ओके अगर कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाता था. ओके सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज व्हाट, डायमैग्नेटिक. नेक्स्ट वन इज कि जो सेंट्रल एटम है दैट इज X will show different oxidation state in different interhalogens. ओके अभी देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था फॉर एग्जांपल IF3 IF5 IF7, सपोज ऐसा मैंने एग्जांपल दिया. तो यहाँ पर देखो सेंट्रल एटम सब जगह आयोडीन है, तो आयोडीन का यहाँ पे चार्ज हुआ +1, यहाँ पे चार्ज हुआ +3, यहाँ पर चार्ज हुआ +5, यहाँ पर चार्ज हुआ उसका +7. ओके यानी सेंट्रल एटम का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इन डिफरेंट Inter-Halogen compounds. Okay, this is what I want you to understand. Alright, तो ये सारे प्रॉपर्टीज है. पहला उसका नामकरण याद रखो, it's a halide of a more electropositive element. तो उस तरीके से we can do the naming of that. Okay, then the total number of atoms are always going to be what? Yes, even. Okay, then number of X dash atoms is always going to be what? Odd. Okay, central atom is only one, so odd becomes what? Even. Okay, ये याद रखिएगा. Properties of interhalogen that is intermediate, that is in between the constituent halogens. All electrons are paired, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ी में है, and therefore it is going to be what, diamagnetic. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा अलग अलग इंटरहैलोजेंस में, और मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू आयोडीन. ऑलराइट, सो आई होप वी हैव अंडरस्टूड द प्रॉपर्टीज ऑफ interhalogen compounds very well. Now my dear friends, we'll discuss about the preparation of some of the important types of interhalogens, and that is XX and XX-3. So the first category is XX- and the other one is XX-3. Now here when you talk about the preparation method, the first one is by direct combination. So we have Cl2 plus F2, and that's going to give you ClF. The reaction takes place at around 523 Kelvin in presence of copper vessel. We also have a reaction like Br2 plus Cl2, and that gives you BrCl. Similarly, I2 plus Cl2, it gives you ICl. Okay, all these halogens are going to be in equal volumes. So direct combination of halogens. Okay, that is what we can consider. Whereas here we have say Cl2 plus F2. Now this is going to be in excess, and that is going to give you ClF3. Similarly, Br2 plus F2 is going to give you BrF3. So this fluorine is going to be in excess. I2 plus Cl2, it will give you ICl3. So Cl2 is in excess. So this is one method of preparation of interhalogens. Next one is action of a halogen on an interhalogen. So that means what we have is Br2 plus BrF3. So that gives you BrF. Okay. Here we have Br2 plus ClF3.
So that is going to give you BrF3 plus BrCl. Okay. Now I have a special reaction for ICl, and that special reaction will be I2 plus KClO3. That is going to give you ICl plus KiO3, potassium iodide. So potassium chlorate will combine with iodine, again as a result of which it will give you ICl and potassium iodide. ये एक स्पेशल रिएक्शन है फॉर ICl. तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग ने दो तरीके का मेथड्स देखा है. पहला इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजेंस. यहाँ पर जब हम बात करेंगे इन केस ऑफ XX dash, it is going to be this particular part is equal volumes, okay, of both the halogens which are combining directly. So 523 Kelvin in presence of copper vessel, Br2 plus Cl2, it is going to give you BrCl. Okay, now here we can also talk about I2 plus Cl2 giving ICl. So the heating has to be carried out in this case, and also we require HCl as well as HNO3. Okay, in this medium the reaction takes place. यहाँ पर क्या है दोस्तों, इक्वल वॉल्यूम नहीं है. ओके, द फ्लोरीन इज गोइंग टू बी इन एक्सेस और द क्लोरीन इज गोइंग टू बी एक्सेस. सो द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके, जब दो हैलोजन कंबाइन होता है तो उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो एक्सेस में होता है, वो याद रखिएगा आप लोग. सो इस तरीके से हमें मिलेगा रिएक्शन. दूसरा है, ये है हैलोजन है और ये एक इंटरहैलोजन है. सो हैलोजन एंड इंटरहैलोजन रिएक्ट्स टू गिव यू अनदर इंटरहैलोजन. ऐसे यहाँ पर भी है, दिस इज अ हैलोजन, दिस इज अ इंटरहैलोजन, इट गिव्स यू अनदर इंटरहैलोजन. ओके, सो दिस इज XX-3 and this is XX-. Alright, so I hope you have understood the method of preparation of the two types of interhalogens, XX- and XX-3. Now my dear friends, we will be discussing something about the properties of interhalogens of the two types. So properties of the interhalogens, first is XX- and the other one is XX-3. So first is we talk about thermal stability. We can do talk about thermal stability, and the order of this is going to be nothing but we have CLF, we got ICl, we got IBr, we have BrCl, and then we got BrF. This is the order of thermal stability. Okay, in XX-3 it's not possible, so I just put a dash. Next one is hydrolysis. So in case of hydrolysis, BrCl undergoes hydrolysis. It is going to give you a bromous acid, that is HOBr plus HCl. Now in this particular case, for hydrolysis, we have ICl3 undergoing hydrolysis to give you HiO3 plus HCl plus ICl. If I'm going to take ICl and its hydrolysis, it is going to give me HiO3 plus HCl plus I2. Okay? तीसरा पॉइंट है, and that is disproportionation. इसमें if you are going to take BrF, it gets converted into Br2 and BrF5. Whereas अगर यहाँ पर हम लोग लेते हैं ClF3, तो we get ClF2 and ClF4. If I'm going to take ICl3, then I'm going to get ICl plus Cl2. Now if you can look at this reaction of disproportionation, तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर Br getting converted into Br2, मतलब यहाँ पे इसका चार्ज 0 है, यहाँ पे Br का चार्ज +1 है और यहाँ पर Br का चार्ज है +5. तो आप देख सकते हो कि +1 to +0 यानी रिडक्शन हो गया, and +1 to +5 oxidation हो गया, and it is taking place of the same species. यानी reduction and oxidation taking place of the same species, we call it as what? Disproportionation. यहाँ पर देखिए आप ClF3, it gives you ClF2, यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज है +2, यहाँ पर क्लोरीन का चार्ज है +4, यहाँ पर in ClF3 क्लोरीन का चार्ज है +3. So +3 to +2 reduction and +3 to +4 oxidation.
Okay, so once again it's a disproportionation reaction. In this case also, now when you talk about chlorine, यहाँ पे when you talk about chlorine, the charge of that is -1. In this case it is -1. यहाँ पर it is going to be what? 0. Alright, now in this case iodine की जब हम लोग बात करते हैं, so iodine का charge है +1, यहाँ पर iodine का charge है +3. So we have क्लोरीन की जब हम बात करेंगे, सो क्लोरीन पहले -1 में था, ओके, फिर भी वो -1 में है, एंड देन इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू 0. सो दैट इज +3 to +1 is going to be reduction, and -1 to 0 is going to be what? Oxidation. Now only difference is that यहाँ पे the species are different. Okay. फिर हम बात करते हैं about fluorination. 1:1 compound doesn't have a tendency to undergo fluorination, but then this U plus ClF3, yes, we get UF6 plus ClF. Okay, this is possible. So uranium is being converted into a corresponding fluoride, and therefore we say that it is behaving as a fluorinating agent. Next is reaction with unsaturated hydrocarbon. Now the simplest unsaturated hydrocarbon which I am going to consider, and that is nothing but it is CH2 double bond CH2, that is ethylene. So as a result of which what happens is one I goes to this carbon and the Cl goes to the other carbon, और इस तरीके से CH2 single bond CH2 I and Cl. Okay, तो ऐसा बन जाएगा. So these are some of the reactions. यहाँ पर it is not possible, so I just put a dash over here. So we have thermal stability that is to be considered, and that is electronegative difference is the main criteria to decide about thermal stability. Hydrolysis जब होता है तो it gives you an oxo acid. Okay, ये देखो ये oxo acid है, यहाँ पर भी ये oxo acid है. Disproportionation में हम लोग बात करते हैं about oxidation as well as reduction के बारे में, okay, which is taking place in the same reaction. और फिर fluorinating agent में ज़्यादा करके जहाँ पर fluorides are going to be in excess, यहाँ पे तो क्या होगा, fluoride will not be in excess because it is in equal volume. फिर वो किसी के साथ भी combine हो, फिर iodine के साथ हो या chlorine के साथ हो या bromine के साथ हो, लेकिन यहाँ पर वो excess में होगा. So इस तरीके से वो एक element को, यहाँ पे example मैंने uranium का दिया, it gets converted into corresponding fluorides. Alright, और फिर लास्ट में हम लोग बात करते हैं about unsaturated hydrocarbon. So in this case the addition reaction is very easy when the two halogens are in the 1:1 ratio. So इस तरीके से the XX dash will undergo this addition reactions very easily as compared to XX dash 3. So I hope you have understood the properties very well. Now my dear friends, we'll talk about the uses. So we'll begin with the first one, that is XX dash category. Now in this case ICl in glacial acetic acid CH3COH, okay, it's called as a Widges solution, and that is used to determine the iodine value of oil. Okay, oil में कितने प्रमाण में iodine है, that can be found out from this particular Widges solution, that is ICl in glacial acetic acid. Okay, next one is they are also used in the XX type is as a catalyst for the oxidation of arsenic 3+. Okay, 2 + 5. So +3 to +5 का oxidation state है, तो उसमें catalyst की तरह उसका इस्तेमाल होता है. They can also be used in the preparation of our polyhalides. Okay, so these are the uses of XX dash. We come to XX dash 3. They can be used, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, it can be used over here also as the preparation of polyhalides. Next one is ClF3. मैंने आपको reaction बताया है पहले भी. It is used as a fluorinating agent. उसने uranium को convert किया था into uranium hexafluoride, and these can be used to a greater extent as non-aqueous solvents. Okay, solvents means ability to dissolve another substance. So generally it is water, लेकिन water के अलावा भी बहुत सारे ऐसे solvents होते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, non-aqueous solvent. तो this XX-3 can behave as non-aqueous solvents. Alright, so my dear friends, you can check it out over here. These are the uses of interhalogen compounds. So we have considered the preparation, we have considered the properties, and we have considered the uses of interhalogen compounds. I hope you are understanding up to what am I discussing.
Now my dear friends, under Inter-Halogen Compounds हम एक दूसरी ओर जाते हैं और वो है about structure. मैं आपको tabular form में explain कर देता हूँ तो it becomes very easy for you to recollect. Okay? And that is first column होगा formula, दूसरा column होगा name, तीसरा column होगा structure और चौथा column होगा shape. ठीक है? This is what we are going to discuss with. तो सबसे पहले we start with ICL. This is what called as iodine monochloride. Okay, and it's going to be, we just say it's a linear shape. Okay, ये हो गया first one ICL. Next one is we go into ClF3, chlorine, Trifluoride, अब यहाँ पर दोस्तों the structure is like this, 89 degree, F, F and F. Okay, and it is, यहाँ पे दो lone pair आएंगे, this is one lone pair and this is the another lone pair, और इसे हम लोग बोलते हैं bent T-shaped structure. ओके अगर आप ऐसे दिखाओगे तो टी होता है, इंग्लिश का टी, ये बेंड हो चुका है. सिमिलरली वी हैव BrF3, ब्रोमीन, ट्राइफ्लोराइड. So it also has a bent T-shaped structure like this. 86 degree and the same structure, and that is bent D-shaped. Okay, then we have BrF5, bromine, pentafluoride. So we have got Br, Cl, 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 Cl. So they are going to make a square. Okay, and then we have got Cl over here, and there is a lone pair over here. Okay, this is a lone pair. So it becomes square pyramidal. Okay, ये क्या बन जाएगा? Square pyramidal. Similarly, ClF5, इसका नाम क्या होगा? Chlorine pentafluoride. Once again, the structure will be the same. Square बनाऊंगा मैं. Cl at the center, F at the four corners of a square, and one at the apical position. The other is going to be a lone pair, and the structure is going to be square pyramidal. Okay? तो इस तरीके से देखो tabular form में आपको सब पता चल गया. So in simple words, what we can say is that 1:1 जो रहेगा, so it is going to be linear. 1:3 it is a bent T-shaped structure and two lone pairs. Same thing is over here, BrF3. Okay, it is bent T-shaped structure and two lone pair. और जब हम लोग बात करते हैं about XX-5 तो वहाँ पर एक lone pair होगा. And the result, as a result of it, the shape will be, it has to be an octahedral shape, लेकिन एक lone pair हो जाने की वजह से it will be a square pyramidal structure. Am I clear with this? So this is about the structures of the different types of interhalogen compounds. With respect to the structure, दोस्तों मैं आपको एक और relation बताना चाहता हूँ, and that is कि when you talk about a type of interhalogen, then we talk about the number of lone pair, and then we talk about the shape. So type of interhalogen we have is XX dash, XX dash 3, XX dash 5, XX dash 7. तो जब number of lone pair for XX dash की बात करते हैं तो it is going to be 3, then it is 2, then it is 1, and then it is 0. यहाँ पर it is linear. XX dash 3 में it is going to be bent T-shaped. यहाँ पर it is square pyramidal.
और यहाँ पर इट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल. ओके, अगर आप चाहिए तो आई विल ऑल्सो गिव यू वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल हैलोजन. अब यहाँ पर सेंट्रल मतलब कौन सा होगा? X होगा वो. So यहाँ पे it is +1, this is +3, this is +5 and this is +7. Okay, so this is a tabular form of what you get. I'll just give you about the pentagonal bipyramidal X-7 में एक ही कंपाउंड ऐसा है जो दिखा था ये कैटेगरी, that is IF7. So when iodine is going to be at the center, we show it this way. This is what it is. So this is the way the structure is. So at the center you can see there is a pentagon. Okay, 5 पेंटागन है. ये सब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे एक पिरामिड मिलेगा, और मैंने ये सब फ्लोरीन को ज्वाइन किया तो मुझे एक और पिरामिड मिलेगा. इसलिए सेंटर पे पेंटागन, वन पिरामिड अबव द पेंटागन, द अदर पिरामिड बिलो द पेंटागन, एंड देयरफॉर पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर इन शॉर्ट, जिस्ट of all the different types of interhalogen which are present, and this is what the number of lone pair will be, and this is going to be the shape. Okay, so I hope this is very clear to all of you all, and with this we finish it off with the topic of interhalogens. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कि जहाँ पर हम लोग ने बताया था कि दो या उससे ज़्यादा अलग अलग हैलोजन जब कंबाइन होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल के तौर पे, तब उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड. उसके ये 4 टाइप्स हैं. मैंने ये भी बताया था X' इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X, X' का साइज इज लेस देन X. फिर हमने उसके प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा की. देन वी टॉक्ड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ X' एंड X'3. ओके, फिर उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया, फिर हमने यूजेस के बारे में बात किया, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द शेप व्हिच इज स्टिल देयर इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. So I guess the entire picture of interhalogen compounds is absolutely clear in your minds.